Assalamu alaikum students, hope you are doing well, and today I am with a very exciting lecture. That is a continuation of the previous one, but today we have to discuss that in a bit more detail, and we are going to talk about the pathway of the blood, that how blood is circulating inside the kidney, how the kidney is using that blood, and afterwards how the veins are getting that blood और वो kidney से exit out कैसे होता है. तो ये सारे इस pathway की हम बात करेंगे, प्लस फिर हम किडनी के फंक्शन में यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे, दैट विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व और किडनी का कौन कौन सा पार्ट है और कैसे वर्किंग कर रहा है, और लास्ट पे फिर वी विल टॉक अबाउट हार्मोनल कंट्रोल एंड काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म एंड ऑल दैट. ओके, सो किडनी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी जो इंटरनल एनाटमी है, और आपको ये पता है कि थ्रू दी होल कार्डियक बीट 20% 20 to 25% ऑफ दी वन कार्डियक ब्लड इज लाइक डिलीवर टू दी किडनी. तो किडनी उस हिसाब से बहुत डेलिकेट ऑर्गन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, बिकॉज इट इज रिसीविंग 25% ऑफ द ब्लड इन सिंगल कार्डियक बीट. So you all know that the outer part of the kidney is the cortex and the inner one is having pyramids, and that is medullary part, while this like cavity which is present in between is the renal sinus. ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं. Here it is the renal papillae and here are the collecting ducts present inside the medullary pyramids. और उसके बाद फिर हमने ये कहा था कि किडनी को हम लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं, लोब्स की हमने बात की थी. सो दिस इज द रीनल कॉलम्स, दिस एंड दिस. ये जो आपके पास इसके सेंटर में स्पेस है, दिस इज एक्चुअली द रीनल कॉलम. सो किडनी को बहुत सारे लोब्स में डिवाइड करते हैं हम जब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. सो लोब्स में दिस whole is like one lobe of the kidney. This one lobe is having this whole pyramid and half of the renal column. ये जो अगला half है ये अगले lobe में चला जाएगा. So these are the lobes of the kidney. Okay. So coming towards the aorta and like the vessels which are attached to the kidney. जब आप किडनी की anatomy की फिगर अपनी बुक में देखते हैं तो दो आपको vessels बनी हुई नजर आएंगी जो किडनी से किडनी का जो हाइलम वाला पार्ट है वहाँ से कनेक्टेड है. सो ये जो रेड वन है दिस इज एओर्टा, एंड रेड से इसको ड्रॉ करने का पर्पज ये है दैट इट इज गेटिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बेसिकली एओर्टा इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, and basically left side of the heart is having the oxygenated blood which has to be supplied towards certain parts of the body. So ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से आ रही है एओर्टा, और यहाँ आगे आके दिस इज डिवाइडिंग, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे जी रीनल आर्टरी, because now this is going to connect with the renal system. So this is now the renal artery. This renal artery is segmentized inward, and now this is known as the segmental artery. Many books related to anatomy are not describing the segmental arteries, but it is very important to know this. So this is the segmental artery. ये divide होती है, different segments में divide हो जाती है. Segmental artery is now getting entered into certain like lobes of the kidney. So here it is known as the lobar artery, or it might be termed as interlobar artery as well. So interlobar artery because ये different lobes को approach करी है kidney के. Afterwards it is like going here, and here it is like this way. ये आपके पास जो है ऐसे करके arc की form में आती है because it has to cover the base of the pyramid. So here this will be known as arcuate artery, because arcuate इसलिए because it is forming a shape of the arc. So afterwards this is like going to project out into the cortex this way, and here it is known as the lobular artery. That was the lobar one जो previous थी, अब ये lobular artery है, right? Okay, ये जो lobular artery है this is branching out this way because nephrons are, और ये आप देख नहीं सकते because they are like microscopic. तो इस तरह से this is going to divide it, and this lobular artery is making the
afferent arterioles, and these afferent arterioles have to take up the blood towards the renal corpuscle of the nephron. अच्छा, अब इसके बाद ये हमारे पास वेन सिस्टम है, ऐसे ही जैसे आर्टरीज का सिस्टम है वैसे ही वेन सिस्टम है. बेसिकली ग्लोमेरुलस से एफरेंट आर्टेरियोल्स आर टेकिंग द ब्लड टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, व्हाइल इफरेंट वंस आर देयर व्हिच आर मेकिंग द ब्लड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस. लाइक वो जो नेफ्रॉन का पार्ट है, रीनल कॉर्पसल है, वहां से ब्लड ने एग्जिट करना है. अच्छा, अब अगर हम आर्टरीज की हमने बहुत डिटेल में बात कर ली, तो जो हमारे पास वेन्स का सिस्टम है दैट इज आल्सो फॉर्म्ड लाइक दैट. इस तरह से आपके पास वेन्स का पूरा एक सिस्टम है. जैसे आपने एफरेंट आर्टेरियोल्स की बात की, इस तरह हियर दीज आर द इफरेंट आर्टेरियोल्स एंड दीज efferent arterioles are connected this way. Here, and it is making the arcuate vein, जैसे ये आपको नजर आ रही है, connected है. So this is making the efferent arcuate like vein. और जितनी भी आपके पास वेन्स हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रीट कर रही हैं, यानी वंस द किडनी हैव रिसीव्ड द ब्लड देन इट हैज यूज्ड दैट ब्लड एंड नाउ दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज टू वेव ऑफ फ्रॉम द किडनी टू गेट एग्जिट फ्रॉम द किडनी. सो ये आपके पास आर्क्यूएट वेन्स हैं. हियर दे आर लाइक सेम वे, जैसे आपके पास आर्टरीज होती हैं, दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स दी पैपिलरी डक्ट्स, पैपिलरी डक्ट से फिर कैलिसेस में, और कैलिसेस से फिर दे आर कनेक्टेड टू दी रीनल वेन, और फिर रीनल वेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी inferior vena cava, and inferior vena cava is specialized to take the deoxygenated blood from the lower extremities of your body. So हमारे पास जो पूरा सिस्टम है इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे एक फ्लो शीट में आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ. दिस माइट हेल्प यू. सो सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड लाइक एओर्टा. एओर्टा हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली वेसल है विच इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. देन दिस एओर्टा इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी. ओके, then the blood will like project through this renal artery into the segmental artery. Sorry. Then from this segmental artery, this is going to be in lobar artery. Then this lobar artery is projecting out, जो मैंने वहाँ पे आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है. Here, this lobar artery is projecting out, covering the baseline, and that is known as arcuate artery, right? Afterwards, आपके पास ये जो arcuate artery है, this is more dividing, divide होती है, तो this is making the lobular artery. ठीक है जी. lobular artery से blood is like projecting towards the afferent arterioles, और हमने कहा है कि afferent arterioles definitely arterioles हैं तो इनका diameter less होगा बहुत as compared to the aorta और arteries की निस्बत. So afferent arteriole is there to make the blood like available to renal corpuscle. Renal corpuscle हम पिछले lecture में discuss कर चुके हैं, that is like glomerulus and Bowman's capsule. सो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अब क्या होता है कि किडनी ने ब्लड को यूज कर लिया. नाउ हमने ये कहा कि हियर आर द इफरेंट आर्टेरियोल्स, राइट? ओके, अच्छा, इफरेंट आर्टेरियोल्स डिवाइडिंग इनटू द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द किडनी आर मेकिंग द पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज. They are making the peritubular capillaries, and inside, projecting inside the medulla into the depth of the medulla,
they are having an additional set of capillaries, an additional plexus of capillaries that is known as vas recta or vasa recta there. और afterwards फिर आपके पास बिल्कुल उसी तरह से venules होते हैं जिस तरह arteries are divided. So next फिर हमारे पास into the, like from the efferent arterioles, this is coming into the arcuate veins, then it is moving towards the lobar veins, and then this is coming towards the renal vein, and afterwards renal vein ke baad this is going to the inferior vena cava. So this is the whole blood circulatory system within the nephron जो हमारे पास follow हो रहा है. सिर्फ आपने एक बात नहीं इसमें पढ़ी है जो याद रखने वाली है कि efferent arterioles की projections हैं actually जो ये जो peritubular capillaries हैं और vas recta है. Now we are going towards the functions of the kidney next. Okay, coming towards the function of the kidney, हमारे पास kidneys को दो तरह के functions हैं जो kidney perform कर रहा होता है. One sort of function is like excretion and the other one is osmoregulatory function. The excretion is usually of the nitrogenous waste, and while talking about the osmoregularity of the body, that is like reabsorbing the water when it is required, and that is excreting the water when it is in excess, right? So that is how it is making the body in the appropriate conditions regarding the वाटर लेवल. इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में इसका रोल है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में इसका रोल है. किडनीज का दे आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन एंजाइम्स लाइक रेनिन दैट इज मेकिंग द ब्लड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ like up to the mark. And when we are talking about the urine formation, that is a major function of the kidney, and after like urine formation में हमारे पास 3 steps हैं. Number 1 is glomerular filtrate. So let me draw this in order to explain. So here it is the plexus of the capillaries, like this is the glomerulus. अभी हमने कहा कि इसमें से we are having afferent arteriole passing as well as the efferent one. Now this efferent one have a lesser diameter as compared to the afferent one. Now consider this afferent one which is making the blood available to, like from here the things are getting inside the glomerulus, और यहाँ से it is the like exiting off. So this is efferent arteriole. This whole space inside is the glomeruli. अब हम ये कहते हैं कि glomerulus के sides पे there is the double membranous structure which is the Bowman's capsule. So here it is the cover, it is the Bowman's capsule, and here it is descending down into the tubule system. अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ब्लड यहाँ से पास हो रहा होता है, जो ग्लोमेरुलस है, इसकी जो वॉल है दैट इज पोरस, एंड लाइक व्हेन द ब्लड इज एंटरिंग इनटू द efferent arterioles it is making a pressure. अब ये जो प्रेशर ग्लोमेरुलस फेस कर रहा होता है, दिस इज एक्चुअली द ब्लड प्रेशर. And inside the blood, अगर हम प्लाज्मा की composition पढ़ते हैं तो more of it is water. So this is termed as hydrostatic pressure. This is actually the hydrostatic pressure. Let me discuss the values of this after. Firstly, I think I have to discuss the Bowman's capsule. So this Bowman's capsule is double walled, as you can see, and this is like made up of the squamous epithelial cells. जो इसकी wall है, this is made up of squamous epithelial cells. Here it is the blood entering inside, right?
और हम ये कहते हैं कि जी इसकी वॉल हमारे पास पोरस है, ब्लड प्रेशर की वजह से इट इज़ मेकिंग द प्रेशर एंड इट इज़ एक्चुअली द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हेन वी आर encountering with the values of this. So the pressure which it is exerting is 55 mm of mercury, while this hole which is generated by the Bowman's capsule is like 45 mm of mercury. So the net difference is 10 mm of mercury which is more. जो gradient आपका establish होता है वो is 10 mm of mercury की वजह से है. So जब आपके पास उतने pressure से चीज़ें आती हैं, the wall is like porous, but this is permeable to some things which are lower in the molecular weight. The things which are having the higher molecular weight and having a bigger size are not able to get filtered for this. Let's make a list of this कि कौन कौन सी चीज़ हमारे पास filter हो सकती है और कौन कौन सी चीज़ नहीं हो सकती. For example, inside the blood, if I'm talking about the blood cells that are RBCs, there might be WBCs, that are platelets, thrombocytes भी जिनको आप कहते हैं. Along with that, fat and proteins would not get filtered. ये आपके पास high molecular weight containing चीज़ें, so they will not get filtered. They are not able to get filtered. And if we are talking about the filtrate, actually the filtrate is something जब आपके पास blood यहाँ से pass हुआ, इन porous walls में से जो material excrete out हो गया, यहाँ से निकल के Bowman's capsule में आ गया, this is now known as the glomerular filtrate. And because this is getting filtered with or glomerulus ही main component है जिसमें role play करता है, so this whole step is known as glomerular filtration. So here these are the things which were not be able to get like filtered. And if we are talking about the filterable things, that is amino acids, that is certain electrolytes, for example sodium, calcium, potassium, chlorine, etc. And that is, there might be glucose, there might be creatinine, and obviously water. What is there जो हमारे पास filter हो सकता है because neutral भी है और a low molecular weight containing है. So this is the first step in urine formation, which is actually the glomerular filtrate. So next we will go towards the selective reabsorption in a while. Okay, firstly we have explained the glomerular filtration. हमने पूरा पढ़ लिया है कि how the pressure is generated and how the things are getting like filtered from the glomerular walls and how they are like executing inside, accumulating inside the Bowman's capsule. Bowman space में जो चीज़ आपके पास आती है, Bowman space is here. ये वाली चीज़ आपके पास Bowman's space है. So here the glomerular filtrate is there. So ये glomerular filtrate जो है वो यहाँ से आपके पास गुजर के आएगा into the tubular system. Tubular system में आपके पास तीन चीज़ें हैं which are very common. That is the proximal convoluted tubule, that is the U-shaped hook-like structure which is the loop of Henle, and afterwards we are having the ascending or descending limb दोनों के loop of Henle के, and afterwards we are having the like distal convoluted tubule और उसके बाद फिर collecting ducts आ जाती हैं. तो जो selective reabsorption है basically हमारे पास selective reabsorption is all based over the need of the body. The thing which is needed by the body would be reabsorbed. Now सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे reabsorb नहीं हो रही, सिर्फ आपके पास कुछ चीज़ें body select करती है to get reabsorbed. So that is why this terminology is introduced over here, that is the selective reabsorption. This selective reabsorption is all done by the proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule and descending and ascending limb of the loop of Henle. So आपके पास कुछ inorganic salts हैं, water है, कुछ organic salts हो सकते हैं, या आपके पास कुछ like organic components हो सकते हैं which are going to get filtered या reabsorbed within the body, and it is throwing back from the these things into the interstitium, so that may get a part of the body और फिर body के circulatory system का part बन के दोबारा से that are provided to the body. Selective reabsorption के बाद there is something unique which is usually the secretion. This secretion has also like connected with the proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule
and like loop of Henle completed, descending or ascending limb दोनों loop of Henle के. Secretion का मतलब ये है कि there are certain things which are excreted out. For example, if we are talking about ammonia and hydrogen, they are secreted out. They are secreted out by into the lumen, ammonia and hydrogen. This ammonia and hydrogen and some things like that are there to make the pH of the urine suitable. That pH is 4.8 to 7.5 approximately, and these things are working like to maintain that pH. They are basically working like a buffer kind of thing, which are making the pH of the urine that acidic. So अगर ये वाली चीज़ें release नहीं होंगी, so जो urine की pH है, that would be basic and that would be problematic to the body. So this is a whole overview of the functions of the kidney. So now we are going towards the counter current multiplier mechanism, that how this loop of Henle is working over there in order to make this whole phenomena to occur. So let's have a look at certain parts of the nephron, that how they are working. So number 1 पे हमारे पास है renal corpuscle, जिसमें दो components हैं, Bowman's capsule and glomerulus, जो capillaries का पूरा plexus है. So this is important for the production of glomerular film. Proximal convoluted tubule is right after there, और ये हमारे पास important है for the reabsorption of water, ions and organic compounds. Then there is the loop of Henle. Loop of Henle के दो parts हैं जी, ascending limb और descending limb. When we are talking about the ascending one, so this is permeable for the ions, chloride and sodium. And when we are talking about the descending limb, it is important for the reabsorption of excessive water. And afterwards हमारे पास आता है जी distal convoluted tubule. Number 4 पे we are having distal convoluted tubule. So when we are talking about the distal convoluted tubule, it is like important for the reabsorption, but it is not that important कि ये सिर्फ reabsorption कर रहा है, but instead of this it is important in secretion. जो भी हमने secretion discuss किया है, secreting certain things like hydrogen, ammonia, etc. और certain toxins and drugs as well. Distal convoluted tubule के बाद जो हमारे पास 5th part आता है, that is the collecting duct. So sometimes collecting duct से भी selective reabsorption होती है. Sometimes the reabsorption is more needed. So the collecting duct is there for the reabsorption. And at the ending of the collecting duct, जहाँ पे collecting ducts हमारे पास end हो रही हैं, that is the papillary duct. So this papillary duct is important to make the urine moving out into the minor calyxes, and afterwards ये फिर major calyx का part बनता है. Major calyx से that is all gathered in the pelvis. Pelvis से ureters are there which are taking up them into the urinary bladder, and that is passed on from the urethra. Okay, so coming towards the counter current multiplier mechanism, that how this मतलब जो पीछे की कहानी है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है. So this is like here, it is the thick ascending limb. This whole is the loop of Henle. थोड़ी देर के लिए आप इसको loop of Henle समझें. और ये हमारे पास है जी descending. This I have explained earlier, I think, that descending limb is inside the medulla, that is getting deep down into the medulla, and the ascending limb is up towards the cortex. So here जो हमारे पास ascending limb की wall है, that is more permeable to ions, particularly for sodium and chlorine. So this is going to excrete out sodium here and chlorine as well. So अब हमारे पास क्या होता है, होता ये है कि number 1 हमने क्या बात की, हमने कहा कि इसकी wall में certain channels are there which are sodium transporters, salt transporters. So firstly, salts are transported into the lumen, right? जब आपके पास salts यहाँ transport होते हैं तो यहाँ पे concentration increase कर जाती है inside the lumen. In interstitium में हमारे पास here it is the higher concentration. When the concentration is getting higher inside the lumen, यहाँ पे हमने कहा कि concentration increase कर जाती है, concentrated solution आ जाता है.
When the concentration is higher, so हमारे पास क्या है कि इसका मतलब ये है कि water is having a lower concentration here. So if the water is having a lower concentration, so there would generate basically a difference of gradient. Gradient generate होगा और आपके पास उस gradient को settle out करने के लिए ये जो wall है, जो descending limb की wall है, this is permeable to release out water. So this will release water over here, like from a higher concentration to lower concentration. इसको balance करने के लिए अब हमने तीसरी बात क्या की, हमने कहा कि descending limb की wall से आपके पास water is removed here. जब water remove होगा तो हमारे पास यहाँ पे internal condition क्या होगी, internal condition ये हो जाएगी कि here it would be of हाई कंसंट्रेशन. इसकी जो एक डाइल्यूशन थी वो ख़त्म हो गई. सो हम इस पूरे को कंक्लूड कैसे करते हैं, कंक्लूड ऐसे करते हैं कि देयर वुड बी हाई कंसंट्रेशन इनसाइड हियर इन द डिसेंडिंग लिम्ब while there would be a lower concentration inside the ascending limb. So in order to balance this will move from here towards the ascending limb. This probably doesn't make sense, but this is very important in if this is not going to happen, आपके पास जो molecules की movement है that would not get possible because of this permeable nature of descending limb and vasa recta as well, and due to the peritubular capillaries 99.5% water can be reabsorbed. And afterwards अगर हम दोनों kidney के parts की concentration का difference देखें तो cortical part जो है that is more diluted while the medullary part is more concentrated because जितनी भी आपके पास reabsorption है वो ऊपर cortical parts में हो चुकी है. अभी आपने different parts देखे तो आपने कहा collecting duct से reabsorption last time होती है. So whole water and diluted elements are absorbed inside the cortex, and the remaining part which is solidified in terms that is having more concentration of urine that is evacuated into the medulla or medulla से that is passed on when the conditions are there. So आपके पास इसको control करने के लिए दो hormones हैं. Number one is the ADH which is antidiuretic hormone, और नंबर टू जो हमारे पास सॉल्ट बैलेंस को एक्चुअली कंट्रोल करता है दैट इज द एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन दैट इज जस्ट अबव द कॉर्टेक्स एंड इट इज रिलीज फ्रॉम द कॉर्टेक्स. जो इसका रिलीजिंग फैक्टर है दैट इज इनसाइड द एंटीरियर पिट्यूटरी. व्हाइल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एडीएच तो एडीएच का जो रिलीजिंग फैक्टर है दैट इज इनसाइड द एंटीरियर पिट्यूटरी. होप यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टुडे. सो थैंक यू सो वेरी मच.